Welcome to Easy Physics. Let's discuss more questions from CSIR NET Physical Science, November 2020. So the question is, आइगन वैल्यू पूछी गई है आपसे, मैट्रिक्स गिवन है. तो we all know that trace of the matrix is sum of the eigen value and that will be the sum of the diagonal elements. So the sum of the diagonal elements is a square plus b square plus c square. So that will be equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. And if you find the determinant of this matrix, then the determinant of the given matrix is 0. And we all know that the product of eigenvalue is equal to the determinant of the matrix. So from these two equations, we are able to find out that from the given option, if the sum of the eigenvalues is equal to this and the product of eigenvalue is equal to 0, then that will be your option. But in this question, in all the options, these two conditions are satisfied. ये दोनों जो conditions हैं वो given option, सारे जितने भी options थे वो satisfy कर रहे थे. अब next क्या है? अगर ऐसा है तो we are not able to find out correct answer using these two options. तो अब next property क्या आती है कि अगर हम किसी एक रो को इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अदर रो के टर्म में लिख सकते हैं, then one eigenvalue will be 0. So here we can write R1 in terms of R2. कैसे? If we multiply R2 by A by B, then what you will get? R1. And if you multiply R1 by C by A, then you will get R3. As I have already written, that R1 is equal to A by B R2 and R3 is equal to C by A R1. Hence, two eigenvalues of the given matrix are 0. So the option 1, in some booklet, the option 1 is A square plus B square plus C square 0, 0. So this will be your answer. Now the next question. In the next question, energy relation with K is given for 1D and you have to find out the best suited graph for in between density of state and K. और K की range आपको given है pi by 2a to pi by a. So first of all, to solve this question, we should know the one-dimensional density of state formula. तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें ग्राफ का नेचर फाइंड आउट करना है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग प्रोपोर्शनलिटी साइन कि वो क्या होती है, सिर्फ डी के प्रोपोर्शनल होती है. अब इस ई के रिलेशन से वी कैन फाइंड आउट डी के. तो डी के विल बी इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन के ए. इफ यू डिफरेंशिएट दिस फर्स्ट इक्वेशन देन आपको क्या मिलेगा कि डी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन के ए. ओके, so from here put this dk in this equation, you will get GE is proportional to dE upon 2ta sin ka. Now put the value of k pi by 2a and pi by a. So at pi by 2a sin ka will become, so if you put instead of k you will put pi by 2a, so you will get pi by 2. Sin pi by 2 is 1. So you will get DE is proportional to DE upon 2ta. And if you put pi by a, then GEDE will be equal to infinity, because at pi by a, this denominator term will become 0. So your GEDE will be infinity at pi by a. So so this option is correct, this type of options, but there are other options are like this type of options are there, that it is infinity at pi by 2a, approximately tending to infinity at pi by 2a,
and tending to infinity at pi by a also. And one more option is like something like this, I think. So you can say this option is correct. Okay. Now let's do the next question. तो अभी यहाँ पे किसी क्या क्या गलतियां हो सकती थी, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट का फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी था वन डायमेंशन के लिए. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. For potential VR is equal to C upon R square for Born approximation. तो differential scattering cross section is d sigma by d omega, that is equal to the square of scattering amplitude. अब scattering amplitude का फॉर्मूला याद होना जरूरी है. For Born approximation, that it is f theta comma pi is equal to minus 2m upon h cross square q limit 0 to infinity r VR sin q r dr. VR की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, c अपॉन r sin q r dr, और sin q r by r dr ये जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी इक्वल टू पाई बाई 2. तो जो f थीटा कॉमा फाई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन q, हेंस d sigma by d omega which is square of scattering amplitude is proportional to 1 upon q square. So the answer is 1 upon q square. Now let's do the next question. So the next question is find out the phase space trajectory for given potential. तो हमें एक potential given है, E को भी उन्होंने फिक्स कर दिया है, लाइन E की फिक्स कर दी है. अगर ये लाइन हमें यहाँ कहीं दी होती तो ग्राफ चेंज हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पे E की भी लाइन फिक्स कर दी है, तो आपको इस E के रेस्पेक्ट में फेज ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करनी है. तो हमें पता है कि px स्क्वायर अपॉन 2m प्लस vx इज इक्वल टू e है, यानी कि अगर आपका v घटेगा, क्योंकि e जो राइट हैंड साइड है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू कोई फिक्स है, तो आपको यहाँ से vx अगर आपका घटेगा तो px इंक्रीज होगा, और अगर px डिक्रीज होगा then your vx will increase. So from here at the turning point where e is cutting v, where e is equal to v, then px is equal to 0. So at this point where e is intersecting the graph, p is equal to 0. So at these 2 points p will be equal to 0. At not किसी और पॉइंट पे v आपका 0 नहीं, p आपका 0 नहीं होगा. This is p. This graph is px versus x. So किसी और पॉइंट पे आपका p 0 नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट्स पे e जो है वो v को कट कर रहा है, तो इन्हीं दो पॉइंट्स पे आपका v 0 होगा. Now as v is decreasing, p is increasing. So till here p will increase. Now after that v start increasing. So after that p will start decreasing. At this point e is not equal to v. E is not equal to v, so there is some gap, there is some value of p. Now again v is decreasing and p will increase. So this type of graph will be your answer. So you will get such kind of phase trajectory. Okay, now let's do the next question. Thank you आप सभी का इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए. If you like the video, please subscribe and hit the bell icon for more future updates. Thank you.